औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। मेरा और आपका साथ रहता है एवरी फ्राइडे को रात 9 बजे के बाद। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। कनाडा में ख़ास तौर पे टोरंटो में वी आर इन अ वेरी बैड स्नो स्टॉर्म since yesterday, and I drove today actually from the south to the north, and it was just very hard to drive. Blowing snow and freezing rain. बहुत सारी जगहों पे पावर आउटेज रहा है सारा दिन, and so wherever you are, if you have nothing to do, please do not go out and drive because it is not safe. You cannot see, it's a zero visibility, and it's just very bad. वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप सारे आईपी बॉक्सेस पे देखते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम आपके साथ लाइव हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम अगर आप कुछ सेंटिमेंट एक्सचेंज करना चाहें हमारे साथ, तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। 5199235220 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर है, और सोशल मीडिया हैंडल है हमारा @voiceoftoronto.tv। और फीडबैक के लिए आपका फीडबैक हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी हवाले से voiceoftoronto.tv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। शेलबर्न के अंदर मैं जिक्र करता रहता हूँ, डफरन मुस्लिम सेंटर जो है उसका क़याम काफ़ी अरसे से है, और वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है, वहाँ पर कुरान की क्लासें होती हैं। और उस हवाले से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डफरन मुस्लिम सेंटर की जो लाइन है उस पर आप कॉल कर लें। 647-518-3000 647-518-3000 उनकी डायरेक्ट लाइन है, और उनसे बात कर लें। और उस हवाले से अगर आप डोनेशन भी करना चाहें मस्जिद में, ख़ास तौर पे एवरी मंथ देयर इज़ सर्टेन एक्सपेंसेस दैट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर। तो अगर आप कोई मसल्ला डोनेट करना चाहते हैं या कंटिन्यूसली रिकरिंग डोनेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गेट इन टच विद देम एट 647-518-3000 उनके राब्ते का नंबर है। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे आप बहुत सारे शोज़ देखते हैं, और ड्यूरिंग द वीक हमारा आपके साथ जो सिलसिला रहता है, और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि नए साल के अंदर एज़ वी आर हेडिंग टू एंड ऑफ द ईयर 2025 वी विल बी स्टार्टिंग सम न्यू प्रोग्राम्स इंशाल्लाह, जिसकी कि मुझे फरमाइश आती रहती है बहुत दफ़ा। डिफरेंट किस्म के फीडबैक्स हमें मिलते रहते हैं। रमज़ान विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह इन February ऑल्सो, और हर साल की तरह रमज़ान की भी ट्रांसमिशन जो है यू विल बी वाचिंग लाइव विद अस इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम रहें अफ्तार तक, और उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं हम आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहें, और अगर आप स्मॉल बिज़नेस में हैं, और अगर आप स्मॉल बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्मॉल बिज़नेस को शुरू करने जा रहे हैं, तो वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर आप एडवर्टाइज़ करके यू विल बी मेकिंग अ वाइज डिसीजन। बेकारी हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है, आई कैन अश्योर यू वी कैन पुट आउट दिस मैसेज लाउड एंड क्लियर, एंड इट विल बी बेनिफिटिंग यू इंशाल्लाह। और उसके लिए वी हैव स्पेशल पैकेजेस डिज़ाइन। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें votmedia.ca। इस पे जाके आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं, और वहाँ पर उसके प्राइसेस भी अवेलेबल हैं। 31 दिसंबर को वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न इन कोलैबोरेशन विद दिल हमारा पाकिस्तान और आलम अरबी जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं, वी आर पुटिंग टुगेदर अनदर शो फॉर यू इंशाल्लाह 31 की रात को, इवनिंग को, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एट औताक बैंक्वेट हॉल। उस हवाले से इम्पॉर्टेंटली ये कि टिकट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, और यू डोंट वांट टू मिस बुशरा बिलाल की परफॉर्मेंस। there will be songs competition, there will be a lot of activities that night। और उस हवाले से जो टिकट्स हैं वो हमने उसकी प्राइस नहीं बढ़ाई, उसकी प्राइस जो है वो $49 ही है। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं इवेंट को, प्लीज़ गेट इन टच विद मी आफ्टर द प्रोग्राम। आपको टेबल बुक करना है ऑफ 10, वी कैन ऑफर यू स्पेशल डिस्काउंट ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न। सिंगल ticket is $49, so give me a call after the program 905-965-4786। मेरी कोशिश ये होती है कि इस करंट अफेयर के प्रोग्राम्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस करें। आज चूँकि मेरे साथ दो एक गेस्ट भी हैं, और मैंने कोशिश तो आज ये की थी कि मैं थोड़ी सी कनाडा के हवाले से बात करूं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं
लेकिन मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो ईयर इन रिव्यू का प्रोग्राम होगा अगले फ्राइडे को 26 दिसंबर को इंशाल्लाह, सो आई विल बी रिव्यूइंग द होल ईयर, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं 2025 के अंदर, उस पर हम इसको टोटली करंट अफेयर के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून फॉर दैट शो इंशाल्लाह। अब हमारा जो प्रोग्राम देखते हैं द कार शो विद अंजुम मलिक, उसके हवाले से मुझे फीडबैक मिलता रहता है। और अगर आप कार डीलर हैं, यूज़ कार डीलर हैं, आपको गाड़ी बाय करनी है, लीज़ करनी है, कुछ भी करना है, आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता करें 9059654786 एंड वी कैन बी एबल टू असिस्ट यू हाउ टू गेट टू द डीलर एंड हाउ यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन एंड यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी विद अ लॉट ऑफ गुड इंटरेस्ट रेट्स। कनाडा में बहुत सालों से जो बैंकिंग का जो सेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं। आज का जो मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर जो ये सेगमेंट है हमारा, जिसमें एक हमारे जो एक स्पेशलिस्ट हैं पियर, ही इज़ ऑलवेज विद अस। एंड आज मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी TFSA जो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसके हवाले से, कि उसको आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसमें किस तरह का आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो आपकी इकट्ठी होती है उस पर टैक्स होता है नहीं होता, उसकी यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, because if you are someone who is watching the show on Facebook, on YouTube, on our boxes, on IP channels, if you have any call for our guests tonight, please pick up the phone, give us a call and talk to them. And the number again is in the red bar, 519-923-5220. And let me see with me, as usual, he's a regular guest with us. Let me see if he's with us. हमारे साथ हैं Pierre, is he with us? अच्छा, he's with us. He's with us. Assalamu alaikum. A very good evening, Pierre. How are you tonight? Assalamu alaikum. I'm doing great. Thank you. It's very cold outside. It's very very cold. Can we have his a little bit more audible voice? इनकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा प्लीज़ ज़रा। Is it Yeah. me or? Yes, Pierre. Good evening. Yeah, it's been a frigid weather today, and I wanted to not to move your camera a bit. Just leave the camera still, so you don't. We don't have interruption there. Yeah, this is fine. Thank you so much for that. Yeah. Yeah, this is a bad day today. We didn't have power, for hours today, and it's just a frigid weather, and it's very dangerous to be outside on the highways and the roads today. So today we want to talk a little bit about, in our banking sector, one of the very valuable product that the bank have. It is called the TFSA, the tax-free saving account. Why it is important, why it is someone should have it, what are the benefits of it, and where that money could be used, and all that. So before I even ask you about that, Pierre, I want you to talk for our new viewers who are connecting with us every week. So the first thing is your phone numbers, the company name, where you are, and your title there, and then we can talk about the topic today. Yes. So my name is Pierre Zgheib. My phone number is 905-966-0066. And I've been in the business for over 26 years. My title is National Sales Director. I'm also a branch manager. And basically, I'm with Sharia Invest, and that's one of the branches of the things that I do, and which is for the Islamic community, and I help manage Sharia investment portfolios. Yeah. Also, I do everything else, basically from financial planning, insurance, investments, mortgages, you name it, we do it. Okay. Yeah. Good to know. Good to know. That's why we like to keep one topic where you can educate the community, through this Voice of Toronto television platform, and every week. That's why we appreciate your time, taking time and talking to us, and sharing your wealth of knowledge that you have in this industry. So let's put a little light on why it is so important for people
to have a TFSA accounts, and what are the usage of that? Okay, so TFSA account is very important, a very powerful saving tool for Canadians because all the growth and the withdrawals are tax free. Yeah. However, a lot of people are misusing the tax-free savings account. They go to the banks and the name is misleading. It says tax-free savings account, Mm. and a lot of people use it as a savings account where they put in money into a savings account and they pull out money whenever they need it. They're using it as an emergency fund versus an actual investment. A TFSA is supposed to have been called tax-free investment account, Hmm. not a savings account, because if you earn only 2% or 1% in a savings account, if that, if you earn 1% in a savings account, what's the point of it? Even if it's not taxed, you didn't earn any money, you lost money because inflation is 3%. Right. So the key is investing it in mutual funds, something that gives you a good rate of return for your future. Because every dollar you put in grows tax free, and every dollar you pull out, it grows. It is tax free also as well. It does not affect your taxable income, and Okay. so everybody has a room of how much they can put in a tax free savings account. Okay. And depending on when you've been in Canada, but let's say you've been in Canada since 2011. So every year they allow you a certain room of contribution for your money to grow tax free. And up to this year, you're allowed $102,000 to invest. Hmm. Total contribution, maximum contribution, if you contributed nothing. So, So that's so pretty can good you put money. that money at one shot, or it has to be on a monthly basis? Great question. Yes, you could definitely put it in one shot if you Okay. haven't maximized If you win it. a lottery. As well, yeah, it is if you win the lottery tonight. Right, right, And right. next year in 2026, the room is $7,000 additional. Okay. So every year it's around 7,000. Sometimes it goes up to 7,500, depending what's going on. But so as of 2026, your room is $109,000. Okay. Now, the cool thing about a tax-free savings account, if you withdraw $10,000, let's say from your tax-free savings account, Hmm. next year, after one calendar year, that room gets created all over again. Okay. So it's not like you use it once and you can't use it again. If Got it. you withdraw the money, let's say for a big vacation, or you want to buy a car, you can put back the money, whatever you withdraw after a year, and you didn't affect the room anymore. So a lot of So people have this notion of when they want to put this money in into TFSA account and they want to buy homes. But I think we touched based on that on the last show for a minute or so. But please educate that this account can or cannot be used to put down as a down payment towards the purchase of a house. it's not meant for putting a down payment for a house. What Okay. a TFSA meant is for retirement. For It's retirement. a perfect vehicle to invest for your retirement. So, let's say you have RRSP or a pension plan. So, Hmm. if you have a pension plan from work, whatever you're going to receive from the pension, you're going to pay taxes on it. Right. So, so you don't take out too much money from your RSPs or your pension that is Excuse me. considered like an income. What do you do to not pay too much taxes? Is you supplement your income by withdrawing money from your tax-free savings account because Right. it's tax-free and it doesn't change your uh, whole income at the end of the year. Okay. Okay. So for tax purposes. Now, can someone open, because everything is getting digitalized nowadays, the banking, can someone open this TFSA account online also, or does it has to be approached to a financial advisor or a personal banker at the bank and open at the branch level? Well, honestly, I don't like dealing with the banks. I know you used to work at the bank before, but I don't like dealing with the banks because the education is not there. You know, Right.
They're meant to only sell products, not and open accounts to Yeah. get bonuses and stuff like that. Our goal is it's better to use a financial advisor planner, and we Okay. could do everything on Zoom. We could Okay. meet face to face, and we can open the accounts very easy. Okay. So you can do a These digital days, it's signature much better. like a docu sign or via email, and it could be done. Exactly, through DocuSign. I meet a lot of my clients through DocuSign, honestly, Okay. these days because they prefer that and they don't want to drive, and I don't want to drive. But if it's a major financial plan, obviously I'd rather want to see them face to face. I come to see them Mm. and we can do the financial plan together. But to get back to your question, Mm. the best vehicle for a down payment of a house is a new type of account that the government allowed Canadians to open. It's called First Time Home Buyers First time home. Savings Plan, Okay. All right. FHSA account. Yep. And that one you could open also with an advisor, and basically you can invest the money, and it lowers your taxable income the year you put it in, just like an RRSP does. So it Mm. gives you a tax refund. So to Mm. give you an example with numbers, let's say you make $50,000 a year. You put in $10,000 in your let's say you put in $8,000 in your FHSA account, and you put in 8,000. So now your income, taxable income, goes down from 50,000 to 42,000. So now the government says, "Oh, we charged you too much taxes. We're going to issue a refund." And an average refund on an 8,000, let's call it to be safe, 25% of that, you're going to get a $2,000 tax refund, which Mm. is great. Plus, now the 8,000 will grow, let's say 4 or 5 years, and then you say, "I want to buy a house now." You take out the money, and every year you're allowed to put $8,000, $8,000. They accumulate fast. Mhm. And after 4 years, you put in 40,000, you got a big tax refunds, Mhm. and the money would have grown, let's say, to 100,000. Now you have a major down payment. No, sorry, to 50,000, let's say, just an example. So now you have a good down payment for a house. You could take it out tax free Okay. to put money on the down payment of the house. Okay. I have Yeah. two questions for you that what came to me after the last program. And the Yes. first question is very, very important. When somebody has been in this country for 15, 20 years and been employed and been paying taxes and pensions and EIs and all that, Yeah. at age 60, okay, what is the best year to apply for CPP at age 60 or 65 to get the maximum Everyone has CPP? a different situation. So if somebody's still gonna be working till age 70, let's say, I'd rather take it at age 70. If let's say they have a big income. Okay. If somebody has a lower income, I don't like taking it at 60. The sweet spot, if you want to take it early, is age 63, Okay. because you get penalized a little bit. You get a little bit less of an income because every year you take it out less, the government penalize you and they discount so much percentage of your CPP Okay. every year. So if the sweet spot, if you don't want to lose too much and you don't want to wait too long, the sweet spot is age 63. And what is the maximum threshold of a CPP? How much money you can get? From a CPP, Yeah. depending on what you contributed during your working years, most people get the average, and the average is around $800 That's the max. per person a month. Yeah. The Okay. max is around 1434, but not many people get the max. Not many get that. Now, the You second have to have question, been here 40 years working. yeah, yeah. The second question came to me was that if a husband and spouse have lower income, lower threshold, less than $40,000, $45,000,
At what age they can apply for a GIS, Guaranteed Income Support Supplement? That is at age 65. 65. Yeah. When you Okay. get the CPP and then you get the old age security, if you're still at a low income, then you can apply for that so they can supplement your income. So at age 65, how much old age do you get? What's the threshold of that? Old age security is around $800 right now. Okay. And so if you are applying for a GIS, it's going to be 800 plus on top of that supplement income? If your CPP is low, Yeah. you apply for GIS and you'll get that top. So basically, you'll get around $1,800 on a monthly basis between GIS, old age security, and CPP, All or together. up to 2,400. Okay. From 1800 to $2,400 for all three of them. All three of them, yeah. All three of them. Which Okay. is not bad if you think about it in today's money, but still, rent is very expensive. Yeah. But if there's two people, it's okay. Yeah. 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 One question before I let you go, importantly, and then next week, because it's going to be a year in review, we're going to have a little bit more discussion next Friday, if you are available on the next Friday show, I'm available always for you. and we're going to talk on some other topics. But before I let you go, importantly, the question that I have for you is, uh, at age 65, when you apply for your old age benefit and you were getting your CPP at age 63, is that CPP is going to increase after 63 when you turn 65, or is going to stay the same? That's the challenge. That's why, depending on people's situation, it will stay the same. Okay. And CPP, whatever you start at, let's say you started at 600, it does get indexed by around 2.1% every year. Okay. 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 Yeah. So Your it does phone go up, number but slowly. and your email address before you go tonight. 905 That's 905 966 0066. And if you want to call, email me, send me an email at info at Pierre Zgheib, the way my first name, last name is spelled, .ca. Thank you, Pierre. Look after yourself. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a great holidays, and we'll Thank you. talk soon. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Bye मच। bye. व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ पियर, और ही इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, ही डज सो मेनी थिंग्स, और 25 years प्लस इन द इंडस्ट्री। और मेरी कोशिश ये होती है कि एवरी वीक वी टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक। इम्पॉर्टेंटली ये कि वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन ने, वी हैव पार्टनर विद वन होम्स यूके, और वन होम यूके जो है, इट इज़ अ बुटीक डेवलपर। दे हैव डेवलप प्रोजेक्ट्स इन लाहौर पाकिस्तान, in Islamabad, Pakistan. They have done projects in Dubai. पाकिस्तान में तीन बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, और वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी है इज़ इन पार्टनरशिप विद वन होम्स यूके एज एन एजेंसी। वी आर हेयर टू हेल्प यू। अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से शेयर करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर लें। आई हैव फुल ब्रोशर्स, फुल प्राइसिंग इंफॉर्मेशंस, उनके साइजेस एंड एवरीथिंग, उसके मोड ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एंड इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव opportunity for you to invest in Pakistan, in Islamabad, either as an end user or also as an investor into Pakistan. So One Homes, as I said, is a boutique developer in UK, One Homes UK. ये जो project हैं, they have done one serene residences in Islamabad. They have just started a brand new project, Dayar, DIYAR, जिसमें के 1 bed suite, 2 bedroom and 3 bedrooms के जो residences हैं अवेलेबल हैं, टाउन होम्स भी हैं, और average price which is very very economical in US dollar is about $110,000 for 1 bed suite, which is around 555 square feet
to 560 square feet. सो इसकी बड़ी आसान इकसात हैं, आप उसको पे कर सकते हैं. मोड ऑफ पेमेंट्स आर देयर. 2 bedroom के भी हैं. 2 bedroom is about 275K. 3 bedroom is about 400K. But importantly ये कि if you have money sitting on a side and you think that you want to make an investment into the country where we are from Pakistan, especially in Islamabad, वहाँ पर जो important aspect of these projects are okay, they are with the backed with the top developer, and also the amenities are amazing amenities. I have all the details of it. आप प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर लीजिए. मेरा नंबर है 9059654786, या आप मुझे ईमेल भेज दीजिए voiceoftorontotv@gmail.com. हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा टची सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ का, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली लोग हैं, they are going through some rough times in their lives, and I thought it would be a great idea to have someone who can put a little light on what to do in case of somebody is going with mental health challenges, and how we can avoid this particular ये जो इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, एज सिबलिंग्स. तो मेरे साथ रहिए. हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. जब वापस आते हैं तो आई हैव विद मी माय नेक्स्ट गेस्ट. वी गोना टॉक अबाउट दैट. यू डू नॉट चेंज दिस चैनल. यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन विद मी अंजुम मलिक. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anjum Malik. Prime Time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female, all ages, language English, Urdu, Hindi. Please call 9059654786. नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिकत और हम. Sahat Hour Hum with Dr. Maybab Siddiqui every Tuesday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Assalamu alaikum viewers, this is Mr. Shafi. Dil Ki Batain every Wednesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. We are hiring. If you are an excellent communicator and have great enthusiasm for marketing, then we are looking for you. Apply now. Voice of Toronto TV at gmail.com or call 905-965-4786. Welcome to a brand new show. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik. The Car Show with Anjum Malik every Thursday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. मैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. Discover Toronto, your city, your voice every Monday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anjum Malik. Prime Time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female, all ages, language English, Urdu, Hindi. Please call 9059654786. नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिकत और हम. Sahat Hour वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट. मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक. और ब्रेक पे जाने से पहले मैं जिक्र कर रहा था थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो उसके चैलेंजेस हैं. हमें एज अ कम्युनिटी या एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, हमें किन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, हाउ वी कैन हेल्प द इंडिविजुअल्स, what sort of agencies are available to help those individuals who are going through some mental health challenges. इस हवाले से हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब सदीकी, उन्होंने अभी शो भी किया था
एक हफ़्ता पहले कि यंगर जो लोग हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, and because of that, there have been a lot of people been committing suicides, and all those challenges that the people are facing in this part of the world, and how what are the the facts and what we need to do as a society, and how we can help individuals as a families, as a community. तो इस हवाले से बड़ा टची सब्जेक्ट है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं वसीम भाई आज वड़ाई साहब, उनसे हम बात करते हैं, एंड ही इज़ विद अस टुनाइट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीम भाई क्या हाल है आपके? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक। अच्छा अच्छा, तो आई बिलीव वसीम साहब आप अपना दोबारा जो है ना उसको कनेक्ट हो जाएं। आई कैनॉट हियर यू, तो आप maybe you can try again because your voice is not coming out to me at all. So इस हवाले से कनाडा में कैनेडियन मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी अवेलेबल हैं जो टाइम टू टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हैं। टेलीविजन्स के ऊपर भी उनके एड्स भी चलते रहते हैं। उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा इशू है कि समवन हु इज़ going through a challenge of a mental health in his life, or she or he or जो भी है, they do not feel comfortable to basically talk about this with someone, because they feel that this is something they should not be sharing with somebody and getting a help, which is sometimes becomes to a point that it is so dangerous that people harm themselves in so many ways. Either they are on drugs, they tend to commit suicides, attempted suicides. So अगर इन चीज़ों को वक्त के ऊपर एड्रेस कर लिया जाए, so I think, I'm not 100% sure, but I think कि इन चीज़ों को जो है हम एड्रेस कर सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फैमिली के अंदर कोई इशू है तो जो भाई हैं, बच्चे हैं, लेट मी सी इफ इज़ विद अस एंड ही इज़ कनेक्टेड बैक विद अस, एंड लेट मी सी इज़ विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी आई कैन हियर यू। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन, माय लाइव ब्रॉडकास्ट। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप अगर अपना कैमरा आप हॉरिजॉन्टल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप if you can sit down and yeah, this is much better, but let's Just have a going around for something. let's sit down in a proper way, and you can sit down on a table somewhere and we can talk to you. It's much better that way. जी, I'm sorry. जी, I'm ready now. Acha ji, thank you so much. I thought you were ready before also, but that's okay. I understand things happen. It's a technology. Yes, So I was in fact. कोई मसला नहीं है। मैं ऑब्वियसली मैं जिक्र कर रहा था ख़ास तौर पे इसके जो मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि सोसाइटी के अंदर इन जनरल, जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो कितना अफेक्टेड है इससे, और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, इसके प्रिकॉशंस में तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंटली थोड़ा सा फॉर पीपल टू नो कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, वेयर यू कम फ्रॉम, what sort of services you provide, what sort of coach you are, mental health coach you are, and then we can get into deep dive into the subject. जी, मैं मलिक साहब यहाँ पे I'm here from Pakistan anyway, and I'm here since 1997. So mainly I am into sales and marketing of food products. Lekin for last 20 years, 25 years, I have been volunteering with the people with mental health issues in different capacities. मैंने nursing home में भी काम किया, मैंने retirement homes में भी, and I worked with people one to one, seniors के साथ भी और youngsters के साथ भी. So with all this time, जो मैंने observe किया, जो मैंने experience किया,
वो ये कि मेंटल हेल्थ मैं पर्सनली उसको दो हिस्सों में करता हूँ। एक तो वो मेंटल हेल्थ है जो या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको हम क्लिनिकली प्रूव करते हैं कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, वो अपनी जगह पे हैं और व्हेन इट इज़ बीइंग डायग्नोज्ड तो उनके एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी। उसमें जो मसाइल हैं लोगों को कि टाइम पे नहीं मिलता ट्रीटमेंट या जो भी है, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरा जो मेन एम्फसिस है, वो जो सोशल फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर है ठीक। कि उन सोशल फैक्टर्स को कैसे एड्रेस किया जाए। क्योंकि जो जो मेडिकली या क्लिनिकली जो बात है, उसके लिए तो सर्विसेज हैं। लेकिन जो बातें आप क्लिनिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उनका बहुत बड़ा किरदार होता है ये मेंटल इलनेस के उसमें, तो मैं उस सिलसिले में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि फूड जो है, फूड इज़ समथिंग कि जो अगर किसी बंदे ने खाना ही नहीं खाया, तो उसका दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करता। सो आई स्टार्टेड अ फूड बैंक हियर इन ब्रैम्पटन। एक यहाँ पे चैरिटी है सेक्स के नाम से, साउथ एशियन कैनेडियन हेल्थ सर्विसेज, उनके साथ मिलके मैंने एक फूड बैंक शुरू किया। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग the donations from different supermarkets and bringing it to our food bank. ठीक है। And Alhamdulillah, I collected about around $100,000 donations in 2 years' time. माशाल्लाह। तो वो किया, लेकिन उसके साथ जो मेन जो एक और जो चैलेंज था वो ये कि ये तो हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ जो अभी गवर्नमेंट में या वैसे प्राइवेटली हम सुनते हैं कि जी ज़्यादा हाउसिंग चाहिए, ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज चाहिए, ज़्यादा कम्युनिटी सर्विसेज चाहिए। ऑफ कोर्स वी नीड ऑल ऑफ देम, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि अगर ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करें, हाउसिंग भी हो, मेडिकल सर्विसेज भी हों, कम्युनिटी सर्विसेज भी हों, सब कुछ हो, क्या इन सब चीज़ों के बाद हम मेंटल इलनेसेस को कंट्रोल कर सकेंगे या उसमें कमी आएगी या नहीं आएगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि ये तो एक अनलिमिटेड बात है कि हम कितनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन एम्फसिस है वो ये है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और उनको कंट्रोल तो हम कर नहीं सकते, लेकिन लोगों को कम से कम ये एजुकेट किया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग है, मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज इस वक्त जो मैंने देखे हैं खास तौर पे, जी। वो आई थिंक उनका फ्रीज हो गया है जो कैमरा है हमारे साथ है। नहीं, आई थिंक उनका कैमरा फ्रीज हो गया है एंड sometime this technology the way it works but maybe he is gonna rejoin us. So मैं बात कर रहा था ख़ास तौर पे जो मेंटल चैलेंज के हवाले से, वो इम्पॉर्टेंटली ये थी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं, वो आप उनको जब मिलते हैं और आप देखते हैं कि वो आइसोलेटेड रहते हैं या आप फील करते हैं कि वो किसी मेडिसिन्स पे हैं, ड्रग्स यूजेस पे हैं, सो इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ह्यूमन बीइंग कि वी शुड रीच आउट टू देम, वी कैन टॉक टू देम and we can discuss. Maybe sometime they don't want to discuss those issues with their parents, with their siblings, with their friends, and and they feel very isolated. माफ़ी चाहता हूँ. So it is very important that people who go through that kind of a situation, they addressed to some extent. और उसके लिए then there are helps available. I do remember there was a situation where few years ago during pandemic, there was a Pakistani family who the father was on medication, or the family was trying to give him medicines, he was not taking his medicine, and the family member have called the nurse, and the nurse came in
and the nurse tried to reach out to that individual, but that individual was very panicky and he said, I'm not going to take the medicine. They have called the police. The police came in. Eventually, it ended up into a situation, a hostile situation, and then he got hurt. So something like that when happens, it is a need of time that we should address this kind of behaviors. Discuss it within the family first, and if you feel that the family is not able to resolve that issue with that individual, then you can reach out to maybe a family doctor, a psychologist, who can talk to them. Taking them, somebody like that, to the hospital is very, very is a stage where people don't want to go to the hospitals, and they feel that their privacy is getting invaded. लेकिन जब अगर आप एक तरीके से उनसे बात करेंगे, कन्फाइन करके बात करेंगे, कंफर्टेबल डेवलप हो जाएगा उनके साथ, एंड देन you reach out to their family doctors, reach out to their psychologists and stuff, and try to help those individual out, then what will happen is that he or she will be feeling very comfortable. So इस हवाले से there are a lot of websites. CAMH is one of the organization, Canadian Mental Health Association of Canada. CAMH उनके नाम से उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, camh.ca पे. Their toll-free numbers are there, and you can get help from there also. I believe हमारे जो guest हैं वसीम साहब, his camera, he has a technology issue right now with his where he is. Maybe today is not a good day. I'll try to connect with him in next time, inshallah. But during हमारा जब प्रोग्राम हम करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में to talk about so many different things that are going on in the world. पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पे, and I was just watching social media. Sometime you see things that come along to you, that कि हमारी जो गवर्नमेंट हैं, they need to educate हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो कस्टम्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एक सेट गाइडलाइंस उनको नहीं हैं, and whoever comes along, they make their own decisions, and by virtue of that, it is putting in a bad impression into the world about Pakistan. Pakistan is a great country, it's a great society. Yes, we have a lot of issues, we have a lot of problems, but a lot of these problems are driven by the fact that people are not educated properly around their surroundings, and he or she, they're making their own decisions when they are doing their jobs. So if you can see that someone is at the airport and trying to fly out from Pakistan to another country, and his or her passport जो है उसको फाड़ दिया जाता है by an airline agent. Where do you hear something like this in this world? It's things like this. Things are happening in Pakistan, and it's not the first time. You can go through so many social media posts, and you can see that people are really fed up the way they get treated in Pakistan, at the airports, by the customs, by the immigration, by the airline staff. So it's about time that Pakistan government के जो हमारे इदारे हैं, they need to focus who are the administration of on those departments, that people need to get properly trained. People need to not take law in their own hands, not to make their own judgments. Judgment calls जो हैं खुद नहीं लेनी चाहिए. You need to get involved with your managers, your superiors, before you make any of those kind of decisions. This is what happens in our part of the world, in the North America, in United States, in Canada, in Australia, in UK. You will never hear something like this will happen. People have their rights, people have privacies, people need to be treated with respect, people need to be given proper respect. At the same time, people should not be treated like animals. And it is so sad that you hear
or you see these kind of posts on social media which circulate around the world, and then it puts a bad impression of that one individual who is doing something like that in the country where we live, where we're from, and the whole country is portrayed as, a bad country. And so that's very sad. On the other note that I wanted to put out, that there was a mass shooting, at Hanukkah in Australia. A lot of people have lost their lives. We condemned it. We condemn it, as a channel. We condemn it as being human beings, that these things should not happen, and people should not be, doing these kind of acts. They are random, they're not, they're randomly happens, isolated incidences, but human lives are very, very precious, and it doesn't matter who that person is, or who nationality is, and what religion they're from. We are all humans, and the respect should be there. I'll come back to you guys next week, inshallah. It's going to be a year in review next Friday. We will talk about during the whole year in 2025 what has happened, what transpired, and we're gonna take some live calls, inshallah. And but जाने से पहले इम्पोर्टेंटली ये कि 31 दिसंबर का जो हमारा शो है, उसके लिए अगर आपको टिकट्स चाहिए, you want to sponsor that event, you want to buy the tickets, you get in touch with me after the program, 905-965-4786, or you can go on दिल हमारा पाकिस्तान का जो पेज है उस पर चले जाएं, वहाँ जाकर आप ट्रांसफ़र करके अपने टेबल बुक कर लें, और स्पॉन्सरशिप के लिए बात करनी है, यू गेट इन टच विद मी. अपना ख्याल रखें. I'll come back to you. I'm so sorry about our guest today. It was a great topic, mental health, but inshallah I'll have him back, and we will discuss in detail. Till then, very good evening and very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ उसको?